Hello everyone, this is Himani Bali and today we'll discuss some new topics of program coding. The basic components that are used in program coding. We'll discuss these topics today. So the topics we'll cover today are components of program, identifiers and literals. So what are the components of the program? Every program has components related to the data part and the work part. A program has these components related to data. So, in general way, we can say that every program has some common elements like the one given below. We have these components that are used in the program: identifier, literals, variables, operators, and commands. So today we'll discuss the first two, identifiers and literal. What are the identifier and what are literals? So let's discuss this. What is an identifier? Identifier are the names given to the various parts of the computer. What is an identifier? It's a name given to the various parts. For example, variables in a program are called identifiers. Every programming language has different set of rules for identifier naming. So identifier forming rules of Java state the following. There are various rules that are followed by mentioning the identifier. Identifier is also known as a variable. It is a variable. Variable is any of the alphabet that is used to store or hold the data in it. For example, x is equals to 10. So here x is a variable. So identifier is also a variable. But in identifier we have to follow certain rules, and that rules are: the first one is identifier can have alphabets, digits, and underscore or even dollar sign character. Identifier must not be standard instruction of Java. For example, it should not be the already used variables like while, do, else, if, switch, break. Identifier cannot be standard literals defined by Java, for example, true, false, or null. They must be begun with a digit. An identifier must be starts with a digit value. It starts with a numeric value also. They can be of any length. इसकी length कितनी भी हो सकती है. Java is case sensitive. That is, what is a case sensitive? Case sensitive means you can write or you can mention the identifier either in the uppercase or in the lower case. यानी आप alphabet जो आप mention करेंगे, जो variable आप लेना चाहेंगे identifier में, that should be in the capital letters or in the small letter. So we have these rules while mentioning the identifier. So the next one is literals. What is a literal? Literal, the actual data values that you use or specify in a program. जो भी actual values आप अपने program में use करते हो, उसको बोलते हैं literals. आइडेंटिफायर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपके कुछ रूल्स आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए कि कैसे हो सकते हैं आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. आइडेंटिफायर की लेंथ जो है वो कितनी भी हो सकती है. तो इसी तरह से हमारे पास ये आ जाते हैं. तो अब हमारे पास है कि लिटरल्स क्या होते हैं. लिटरल्स आर द एक्चुअल डाटा, यानी जो डाटा आप स्टोर करोगे अपने वेरिएबल में, अपने आइडेंटिफायर में, उसको बोलते हैं लिटरल्स. सो द एक्चुअल डाटा वैल्यूज दैट यू यूज और स्पेसिफाई इन ए प्रोग्राम. Literals can be of different types depending upon the types of data. For example, ये different types के literals होते हैं कि आप किस तरह का डाटा उस वेरिएबल में होल्ड कर रहे हो. जैसे कि मैंने आपको बोला a is equals to 10. So वो a जो है equals to 10 जो है वो 10 जो है वो इंटीजर वैल्यू है. So वेरिएबल जो है a
वो अपने अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है. So we have different types of literals. The type of data that a particular variable hold is known as a literal type. So we have four types of literals. The first one is integer literal, real literals, string literals, and the character literals. I'll discuss these one by one. So the first one is integer literal. Integer means it holds the numeric data. वो वेरिएबल जो है वो अपने अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा. दैट इज अ इंटीजर लिटरल. Integer literals are those numeric data values that do not have any decimal point, यानी उसके अंदर कोई decimal point नहीं होगा. That is a integer. For example, 17 is an integer literally. 17 जो number है that is a integer literal. So whereas 17.0 or 167.25 are not. So मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता दिया कि इसके इन जो इंटीजर लिटरल्स हैं इसके अंदर आपका पॉइंट डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. सो वेदर अगर हम जनरल बेस में बात करें तो 17 और 17.0 जो हैं ये दोनों सेम होते हैं. बट अगर हम इंटीजर लिटरल्स की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है ये वैल्यू अपने अंदर होल्ड नहीं करता. सो these two are not the integer literal, but 17 is a integer literal. The next one is real literal. रियल लिटरल्स आर दोज जिसमें आपके अंदर जो वेरिएबल जो है वो होल्ड करेगा, डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, डेसिमल पॉइंट को होल्ड कर सकता है. और दोज न्यूमेरिक डाटा वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होंगे. फॉर एग्जांपल 17.0 माइनस 13.0 16 167.25 is an a रियल इंटीजर. ये रियल इंटीजर है जिसमें न्यूमेरिक पॉइंट हो सकता है, डेसिमल पॉइंट हो सकता है. वेयर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज इसके अंदर होल्ड हो सकती हैं. दिस इज द रियल लिटरल्स. द नेक्स्ट वन इज string literal. What is a string literal? String is a combination of characters. अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ. पहले हम वो डिस्कस करेंगे उसके बाद हम string literal को डिस्कस करेंगे. दैट इज अ character literal. Character is a single alphabet or single letter or single symbol जो भी आपका होता है दैट इज अ करेक्टर. जैसे कि आप ए बोल रहे हो या आप अपना नाम जैसे ले रहे हो हिमानी, तो हिमानी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 characters HIMANI. सो दैट इज अ करेक्टर. तो वो जो 6 कैरेक्टर्स हैं जब वो एक साथ कंबाइन हुए दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग. सो दैट इज अ स्ट्रिंग एंड अ सिंगल करेक्टर इज नोन एज अ single alphabet is known as a character literal. So a single letter or digit or symbol when enclosed in a single quote, जब single quote के अंदर enclose होंगे, एक single quote के अंदर कोई भी एक single letter या symbol या digit आता है, then it is called a character. is called a character literal. उसे character literal कहते हैं. For example, ये देखिए मैंने examples यहाँ पे कुछ दी हुई हैं. ये देखिए single quote के अंदर मैंने A लिखा है, single quote के अंदर B लिखा है, dollar लिखा है, this is a symbol and this is a digit. So these all are character literals. and the उससे पहले हमने जो P है मैं आपको वो भी बता देती हूँ. हमारा एक पॉइंट रह चुका है and that is a string literal. So string literal क्या है? These are the text और अल्फा न्यूमेरिक डाटा वैल्यूज. यानी जैसे मैंने आपको बोला करेक्टर एक सिंगल डिजिट है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स बिकम्स अ स्ट्रिंग. सो वो स्ट्रिंग बन जाती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी हिमानी, तो हिमानी इज अ स्ट्रिंग. सो फॉर एग्जांपल हेलो एंड द स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स. डबल कोट्स के अंदर आप अपने स्ट्रिंग को लिखोगे जैसे कि है हेलो. हेलो के अंदर 5 करेक्टर्स हैं एंड इट बिकम्स अ स्ट्रिंग हेलो. Welcome to Java. This is also a string. 118 it includes the text और alphanumeric यानी numeric value और text दोनों भी include हो सकते हैं. Then train train number है TZ1234. So it includes characters as well as numerics, both the values. Even the decimal points यानी real integers is also included in the string literals. But the rule is that you have to write down the string within the double quotes. Character को आप single quote के अंदर लिखेंगे and that is a single character and string जो है वो double quotes के अंदर होगा and that is a combination of various characters.
सो दिस इज ऑल अबाउट लिटरल्स। आई थिंक लिटरल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, बट आइडेंटिफायर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, जो भी नाम, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि मैंने बोला एक्स, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 10। जब मैंने x इज इक्वल टू 10 लिखा, सो दिस x, ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, दिस x, ये जो ये x है, दिस x इज एन आइडेंटिफायर, जो कि ये वैल्यू होल्ड कर रहा है। सो आइडेंटिफायर में मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफायर क्या है, नेम्स गिवन टू द वेरियस पार्ट्स, जो भी आप वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, चाहे आप उसमें ये a लिखें, तो a जो है, x है, y जो है, ये सब क्या है, ये आइडेंटिफायर्स हैं। सो आइडेंटिफायर, आपको मैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसने बोला अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ds, दिस इज ऑल्सो अ आइडेंटिफायर, क्योंकि आपका अंडरस्कोर जो है, इट इज यूज्ड इन दिस आइडेंटिफायर। सो आपको ये याद है कि आप ये केस सेंसिटिव है, दैट इज या तो आप इसमें अल्फाबेट्स जो हैं वो कैपिटल लिखेंगे या फिर उसको स्मॉल लिखेंगे। अगर स्मॉल लिख रहे हैं तो आप स्मॉल ही लिखेंगे, अगर बड़ा है तो कैपिटल है तो आप कैपिटल ही लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव। तो आपको केस सेंसिटिव लेटर्स को ही यूज करना है। सो आई होप ये आपको टॉपिक्स जो हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग is easily understood by you. Thank you, students.